विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। इस साल भी शायद आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने की कोशिश की है। अगर की है तो बहुत अच्छा किया है, और अगर नहीं की है तो आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस चाहे हम जितना भी बना लें somehow break हो जाती है. In fact, there is a very interesting statistics by Forbes that says that 90% plus न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पहले 3 महीने में फिजल आउट हो जाती है। 61.7% लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के प्रेशर में जी रहे कि हमें कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनानी चाहिए, बनाना ज़रूरी है, और वो प्रेशर के साथ वो कुछ रेजोल्यूशंस क्रिएट करते हैं जो ऑब्वियसली एक क्वार्टर से ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाती। एक क्वार्टर भी काफ़ी ज़्यादा है, एक्चुअली वो 3 दिन तक लास्ट करती है, कभी कभी मैक्स 3 हफ्ते। सो वॉट इज दिस होल फस अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशन? अगर ये इतना बड़ा फेलियर है और इतना बड़ा डिजास्टर है, तो हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? करना क्या है इज अ क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू आंसर फॉर यू ऑल इन दिस वीडियो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ना बनाना इज लाइक हैविंग नो गोल एट ऑल। और अगर कोई गोल ही नहीं है तो हम अचीव क्या करेंगे? राइट? सो द आंसर इज न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना अच्छी बात है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, इट्स अ गुड टाइम इन द ईयर टू थिंक अबाउट वॉट मैटर्स टू यू। क्यों? क्योंकि एक नई शुरुआत है, एक साल की नई शुरुआत, और जिस भी समय हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक होप होती है उसके साथ, एक एनर्जी लेवल होता है जो काफ़ी हाई रहता है, और उस हाई एनर्जी लेवल को यूटिलाइज करने के लिए हम गोल्स सेट करते हैं। सो इज न्यू ईयर रेजोल्यूशन अ गुड थिंग? द आंसर इज यस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट दे वर्क? अगर इतने ही अच्छे हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, तो ये फेल क्यों हो जाते हैं? इसके काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन मैं आपके साथ 3 रीजंस शेयर करना चाहूँगी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये डिसाइड करें कि इन तीनों में से आपका रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न, या तो हम गोल बहुत ही आसान बनाते हैं या बहुत ही मुश्किल। इधर आर गोल्स आर वेरी सिंपल और दे आर एक्सेसिवली डिफिकल्ट। बोथ सिनेरियोज आर अ डिजास्टर। वाई? क्योंकि अगर बहुत सिंपल गोल्स होते हैं देन वी आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, वी गेट बोर्ड। और अगर बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं तो वी गेट डीमोटिवेटेड। जब हम कभी जिम गए ही नहीं और हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि हम हर हफ्ते 5 दिन वर्कआउट करेंगे, तो शायद पहले हफ्ते हम जोश में कर दें, लेकिन अगले हफ्ते वो 3 दिन हो जाएगा, उसके अगले हफ्ते 2 दिन, और उसके अगले हफ्ते आपके जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा ये 5 दिन वाला रेजोल्यूशन तो होने नहीं वाला है, इसीलिए लेट्स नॉट इवन ट्राई। Now, this can be an excessively difficult goal for me if I've not even started working out. So, what is the solution? Take baby steps. Don't get carried away with the enthusiasm कि कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं, और वो छोटे स्टेप्स हमारे गोल्स होते हैं। क्योंकि जब वो गोल अचीव होते हैं तब आपके अंदर वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है, अंदर से एक मोटिवेशन कि ये हुआ है ना, तो अगला स्टेप ले सकते हैं, अगले स्टेप के बाद एक और, एक और, एक और, एंड दैट्स व्हेन वी गेट टू क्रॉस द फिनिश लाइन, वी गेट टू अचीव दैट बिग गोल दैट वी वांट टू अचीव। Second reason why New Year resolutions fail is because we set goals that we should do and not what we really want to do. बहुत लोग हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं, कुछ लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो ज्ञान और एक्सपेक्टेशंस या एक फैड या एक ट्रेंड हमारा गोल बन जाता है कि भाई सब लोग यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं तो इस साल 365 वीडियोस निकालने हैं, ये मेरा गोल है। दिस इज वॉट आई शुड डू इफ आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आई शुड गो टू द जिम, आई शुड अर्न XYZ amount of money, I should write a book. When we set these goals, which we think we should do, we feel compelled to do it because should as a word बहुत ही heavy है। अगर उसको एक weighing scale में डाला जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 किलो का word है ये should, which we carry on our head and our shoulders all the time. I should do this, I should do that. If you take the should out, there is so much lightness in everything. Because when you do something that you should do, you will not be excited to do it. You will do it to prove either to somebody else or to yourself. There is some proving involved in any should goal. So leave that proving aside. क्योंकि जब हम प्रूव करते हैं तब हम एक्चुअली कुछ नहीं अचीव कर पाते। तो अगर प्रूव करना ही नहीं है तो जितनी भी एनर्जी हम ये प्रूविंग में लगा रहे हैं वो एनर्जी हम चैनलाइज कर सकते हैं टू डू व्हाट वी रियली रियली वांट टू डू।
What is it that you want to do? If you really want to write a book, you will. If you really want to go to the gym, you will. Now that you've understood that I should not make it excessively difficult for me, I know that I can create little baby steps to start working out more consistently. Let me put out a goal of going twice a week, then stretch it to thrice, get to 5, make that my final goal, the big goal that I want to achieve. That's the second reason we get stuck with the should and we do not concentrate on what we really want to do. Make your goals what you want to achieve and not what somebody else thinks that you should achieve. And the third reason is that as humans, we hate change. Yes, my friends, we all resist change. Internally, ये human psychology है. हमें change नहीं पसंद. चाहे हम जितना भी खुद को ओपन फॉर चेंज, ओपन माइंडेड क्लेम करें, इंटरनली वी रेजिस्ट चेंज. हियर साइकोलॉजिकली वी आर नॉट कंफर्टेबल विद एनीथिंग दैट इज नॉट फेमिलियर. जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस नहीं है, वो चीज़ करने में हमें बहुत हेजिटेशन होती है. इसलिए हमें ये सब चीज़ें करने का बहुत मन करता है जब हम छुट्टियों पे जाते हैं. व्हेन वी आर ऑन अ वेकेशन वी वांट टू डू new things because we don't do it otherwise. It takes a different kind of a mindset to say, okay, I'm on a vacation, I'm going to try something that I've never done before. That's what I did when I was on my New Year vacation. I just did a few things which I otherwise would not do because it requires a different mindset. So we don't like change. Having said that, we also need to learn that change doesn't happen just because you want to change. कि भाई आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे चेंज होना और कल हम चेंज हो गए. ऐसे नहीं होता है. इनफैक्ट देर आर स्टेजेस दैट वी गो थ्रू, एंड टू बी प्रिसाइज देर आर 5 स्टेजेस दैट वी गो थ्रू टू रियली ब्रिंग अ चेंज टू लाइफ. पहले तो हम सोचते हैं कि हमें चेंज करना क्या है, फिर हम सोचते हैं कि हम ये चेंज कैसे करेंगे, फिर हम वो चेंज करने का प्लान बनाते हैं, और फिर वो प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसे मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि वो सस्टेनेबल प्लान बने, ताकि हम कंसिस्टेंटली उस प्लान को फॉलो कर सकें. आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ प्लान बनाने की स्टेज तक ही सीमित रह जाते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते, और यहाँ पर हमारे रेजोल्यूशन का बरियल हो जाता है, लाइक टोटली डेड. बिकॉज आफ्टर दिस द रियल वर्क स्टार्ट्स. आफ्टर दिस stage, this stage of not just creating a plan but implementing the plan, that is when you are out of your comfort zone. And वहाँ से वो challenge शुरू होता है. How far away can you be from what you know? Because the further you go, higher is the probability for you to make mistakes, for you to fail, for you to maybe embarrass yourself, for you to be judged by people. आसान नहीं है ये सब चीज़ें इन्वाइट करना लाइफ में. इसीलिए जो इतने सारे लोग बोलते हैं वी आर ओपन टू चेंज, उनमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअली चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो चेंज के लिए तैयार है. तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप चेंज के लिए तैयार हैं कि नहीं. आप किस हद तक चेंज के लिए तैयार हैं. बिकॉज एनी रेजोल्यूशन, एनी गोल इज सेट टू पुश अस आउट ऑफ आवर comfort zone, to take us to a higher level, from wherever you are to your next level. And if you have to get to your next level, you need to do something different. You need to try things that you have not tried before. So think and take a moment and tell me, which one of these 3 reasons have been your reason to not make New Year resolutions happen for you? Take a pause, think about it, and share it in the comments. And while you do that, I want to invite you all to a hands-on workshop where I will teach you how to make real goals and how to make them into a reality. Not just smart goals, not smarter goals, not goals which are only specific, measurable, achievable, realistic and time-bound, but goals which are purpose-led, meaningful, which connect with you, which you want to do, which you can make happen if you do a few things differently, if you take a tiny step out of your comfort zone. And there is a 3-step process to be learned to get to a stage where you make goal setting one of your strengths. And that's what you will learn with me on 13th of January over this 2-hour workshop. It's going to be a game changer because it will set the right tone, not just for the year 2024, but for years to come. I'm looking forward to having you there for the workshop. Let's make this magic happen together. Please click on the link in the comments below and I will see you right there.